everyone. Today we will be discussing next three topics from cellular injury that are ischemia, infarcts, and free radical injury. This lecture will be bilingual, which means I will discuss these topics in Hindi as well as English. So starting from ischemia. Ischemia occurs because of inadequate blood supply to meet the demand. Mechanisms are decreased arterial perfusion, example atherosclerosis, decreased venous drainage, example testicular torsion, Budd-Chiari syndrome, and third, shock. The regions most vulnerable to ischemia, hypoxia, and further infarction are brain, heart, kidney, liver, and colon. Specific areas in brain are the boundary areas of anterior cerebral artery, middle cerebral artery, and posterior cerebral artery. ACA, MCA, and PCA. In heart, the regions most susceptible to hypoxia and ischemia is the subendocardium of the left ventricle. To show the example, this is the subendocardial area of the left ventricle, and the yellow lines show hypoxia or ischemia that have occurred in the heart. In kidney, the area most susceptible to hypoxia and ischemia is a straight segment of the proximal tubule in the medulla and thick ascending limb of the medulla. In liver, it is the area around the central vein zone 3, and in the colon it is a Griffith point, which is the splenic flexure, and rectosigmoid junction, which is known as the Sudeck point. Some watershed areas or border zones receive blood supply from most distal branches of two arteries, and they have limited collateral vascularity. So they are getting the blood supply from any of the two arteries, that is dual blood supply, and usually it is the border zone. So that's why these areas are most susceptible to ischemia from hypoperfusion. Some of the watershed areas examples are ACA, MCA, and PCA, Sudeck point, and Griffith point. Neurons that are most vulnerable to hypoxic ischemic insults are the Purkinje cells of the cerebellum and pyramidal cells of the hippocampus and neocortex, layers 3, 5, and 6. These are the neurons mostly from the boundary areas of ACA, MCA, and PCA. So basically, इश्कीमिया inadequate ब्लड सप्लाई की वजह से होता है. इसका मैकेनिज्म है आर्टीरियल परफ्यूजन का डिक्रीज होना, एग्जाम्पल एथेरोस्क्लेरोसिस, वेनस ड्रेनेज का डिक्रीज होना जैसे कि टेस्टिकुलर टॉर्जन एंड बड-चियरी सिंड्रोम, और थर्ड है शॉक. कुछ रीजन्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हाइपोक्सिया और इश्कीमिया और इन्फाक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर और कोलॉन. ब्रेन में भी स्पेसिफिकली एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के बाउंड्री एरियाज रहते हैं, और हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल का सब एंडोकार्डियम जो है वहाँ पर हाइपोक्सिया और इश्कीमिया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि ये है एग्जाम्पल. लेफ्ट वेंट्रिकल में सब एंडोकार्डियल रीजन है, और ये येलो लाइंस जो है ये हमें दिखा रही हैं हाइपोक्सिया या फिर इश्कीमिया की वजह से इन्फार्क्शन. किडनी में यूजुअली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो कि मेड्यूला तक एंटर करता है, उसका स्ट्रेट सेगमेंट जो होता है वहाँ पर हाइपोक्सिया और इश्कीमिया के चांसेस रहते हैं, और थिक असेंडिंग लिम्ब जो कि मेड्यूला के अंदर एंटर करता है वहाँ पर भी हाइपोक्सिया, इश्कीमिया और इन्फार्क्शन के चांसेस रहते हैं. लिवर में जो सेंट्रल वेन होता है उसमें भी जोन 3 जो है द क्लोजेस्ट एरिया अराउंड सेंट्रल वेन होता है, वहाँ पर हाइपोक्सिया के चांसेस रहते हैं क्योंकि वहाँ सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई रहता है. और कोलॉन में स्प्लीनिक फ्लेक्चर यानी कि ग्रिफिथ पॉइंट पे और रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन जो कि है स्यूडेक पॉइंट, वहाँ पर हाइपोक्सिया के चांसेस रहते हैं. कुछ वाटरशेड एरियाज होते हैं जैसे कि ACA मतलब एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के बाउंड्री एरियाज ब्रेन में, और ग्रिफिथ पॉइंट और स्यूडेक पॉइंट. यहाँ पर
ये वाटरशेड एरियाज होते हैं यानी कि बॉर्डर जोन्स, जहाँ पे दो आर्टरीज की डिस्टल ब्रांचेस से ब्लड सप्लाई आता है। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई थोड़ा कम रहता है, लिमिटेड कोलैटरल वैस्कुलैरिटी होती है, और इसकी वजह से यहाँ पे हाइपो परफ्यूजन की वजह से इश्कीमिया होता है। और कुछ न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के एरिया में, जैसे कि सेम एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एसीए, एमसीए और पीसीए के बाउंड्री एरियाज, जिनमें हाइपोक्सिक इश्कीमिक इंसल्ट के चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल पर्किंजी सेल्स ऑफ द सेरिबेलम और पिरामिडल सेल्स हिप्पोकैम्पस में ब्रेन के, और न्यू कॉर्टेक्स के थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ लेयर्स। Next, we'll discuss the types of infarction. So, there are two types of infarction: red infarction and pale infarction. In red infarction, it occurs in venous occlusion and tissues with multiple blood supply, example, liver, lung, and intestine and testes. It also occurs because of reperfusion. Reperfusion injury is due. We can learn this by RE in red infarction and RE in reperfusion. This is an example of red infarction that have occurred in lung. Next is the pale infarction. It usually occurs in solid organs that have single end arterial blood supply, for example, heart and kidney. This is an example of pale infarction that has occurred in heart because of single blood supply. इन्फाक्शन में दो तरीके के इन्फाक्शन होते हैं: रेड इन्फाक्शन, पेल इन्फाक्शन। रेड इन्फाक्शन जो होता है ये वेनस ऑक्लूजन में होता है और उन टिश्यूज़ में होता है जहाँ पे मल्टीपल ब्लड सप्लाई होते हैं, जैसे कि लिवर, लंग्स, इंटेस्टाइन और टेस्टिस। और ये उन रिपरफ्यूजन इंजरी यूजुअली फ्री रेडिकल्स की डैमेज की वजह से होता है। इसको याद करने का तरीका है रेड इन्फाक्शन का RE विद रिपरफ्यूजन का RE। नेक्स्ट है पेल इन्फार्क्ट। इसमें ये यूजुअली सॉलिड ऑर्गन्स में होता है जहाँ पे सिंगल एंड आर्टीरियल ब्लड सप्लाई है, फॉर एग्जांपल हार्ट और किडनी। ये एक रेड इन्फाक्शन का एग्जांपल है जो कि लंग में हुआ है, और ये एक पेल इन्फाक्शन का एग्जांपल है जो कि हार्ट में हुआ है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फ्री रेडिकल इंजरी। फ्री रेडिकल इंजरी is the damage caused to the cells because of free radicals. Free radicals usually damage the cells via membrane lipid peroxidation, protein modification, DNA breakage. Free radical damage is initiated via radiation exposure, for example, in cancer therapy, metabolism of drugs, usually phase 1, redox reaction, nitric oxide, example, inflammation, some transition metals like iron, copper. They can form free radicals via Fenton reaction. Neutrophils and macrophages are some WBCs that undergo oxidative burst and cause free radical injury to cells. Free radical injury can be eliminated via some scavenging enzymes like catalase, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, spontaneous decay, antioxidants like vitamin A, C, E, and certain metal carrier proteins, for example, transferrin and celluloplasmin. Some examples of free radical injury is oxygen toxicity, drug chemical toxicity, and metal storage disease. In oxygen toxicity, there is retinopathy of prematurity. It means there is abnormal vascularization, bronchopulmonary dysplasia, and reperfusion injury after thrombolytic therapy. In drug chemical toxicity, if there is acetaminophen overdose, it can cause hepatotoxicity. Then carbon tetrachloride usually converts into CCl3 free radical via cytochrome P40, and this causes fatty liver, which causes cell injury through decreased apolipoprotein synthesis and further fatty change. And the last one is centrilobular necrosis.
Metal storage diseases are usually storage of iron that causes hemochromatosis, and Wilson disease, which is the storage disease of copper. फ्री रेडिकल इंजरी जो होता है ये यूजुअली फ्री रेडिकल्स के डैमेज की वजह से होता है, जो कि सेल्स में होता है डैमेज। और ये फ्री रेडिकल्स यूजुअली सेल के मेम्ब्रेन लिपिड पर ऑक्सीडेशन के थ्रू सेल को डैमेज करते हैं, प्रोटीन मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं और डीएनए ब्रेकेज भी कर सकते हैं। फ्री रेडिकल डैमेज यूजुअली रेडिएशन के एक्सपोजर से इनिशिएट होता है, जैसे कि कैंसर थेरेपी में कुछ ड्रग्स के फेज 1 मेटाबॉलिज्म की वजह से भी हो सकता है, और रिडॉक्स रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड एग्जाम्पल इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, और ट्रांजिशन मेटल्स जैसे कि आयरन और कॉपर जो कि फ्री रेडिकल्स फॉर्म करते हैं फेंटन रिएक्शन के बाद। WBC ऑक्सीडेटिव बर्स्ट होता है न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस की वजह से, ये भी फ्री रेडिकल इंजरी कॉज कर सकते हैं सेल में। उसके बाद इसको एलिमिनेट करने का तरीका है स्कैवेंजिंग एंजाइम्स के थ्रू। ये कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कैटलेज, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, स्पॉन्टेनियस डीके, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जैसे कि विटामिन ए, सी, ई, और कुछ मेटल कैरियर प्रोटीन्स ट्रांसफेरिन जो कि आयरन को कैरी करता है, और सेल्यूलोप्लाज्मिन। अब एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी हैं ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, ड्रग केमिकल टॉक्सिसिटी एंड मेटल स्टोरेज डिजीज। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी में यूजुअली रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी होता है, इसमें एबनॉर्मल वेस्कुलराइजेशन होता है रेटिना में, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया और रीपरफ्यूजन इंजरी थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी के बाद। कुछ ड्रग्स या केमिकल की टॉक्सिसिटी की वजह से भी फ्री रेडिकल इंजरी होती है, जैसे कि एसिटामिनोफेन के ओवरडोज की वजह से, जिसके बाद हेपाटोटॉक्सिसिटी होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि CCl3 फ्री रेडिकल में बनता है, और ये यूजुअली साइटोक्रोम P40 की वजह से बन जाता है। उसके बाद फैटी लिवर होता है, यूजुअली फैटी लिवर सेल इंजरी की वजह से होता है, जो एपोलाइपोप्रोटीन का सिंथेसिस डिक्रीज करती है और फैटी चेंज कॉज करती है। और लास्ट है सेंट्री लोबुलर नेक्रोसिस। थर्ड एग्जाम्पल है मेटल स्टोरेज डिजीज, जैसे कि हीमोक्रोमेटोसिस जो कि आयरन स्टोरेज डिजीज है, और विल्सन डिजीज जो कि कॉपर के स्टोरेज की वजह से होता है।